Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Let's start today's session. And in this session, we will be refreshing a few concepts जो learn किए हैं, and then we will end up with a quiz and one assignment. तो आज का जो सेशन है ये इस कॉन्टेक्स्ट में जो है इम्पोर्टेंट है. So we will be starting in a few minutes. Few more students join in. Okay, thank you very much. We are now starting. If any student have a question from last session, तो अभी हम लास्ट सेशन में अगर किसी का कोई सवाल है तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे. जी, एनी स्टूडेंट हैव ए क्वेश्चन? खालिद, आपका कोई सवाल है? जी खालिद. जी सर, एक्चुअली मसला ये है कि सर पाइथन हमने फर्स्ट सेमेस्टर में सी प्लस प्लस पढ़ी थी, तो सर इसमें कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जैसे लूप्स हैं या फिर कुछ और भी बेसिक्स आती हैं सर, वो काइंडली कोडिंग में, तो सर वो उनको करने में सर थोड़ा मसला आ रहा है जब हम कोड राइट करते हैं ना. ठीक है, खालिद कह रहे हैं कि हमें पाइथन की कोडिंग का मसला आ रहा है. ओके, पाइथन का ये वैसे जो प्रोग्रामिंग का प्राइमरली ये टॉपिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ये प्रोग्रामिंग से लिंक नहीं है, लेकिन ये कंसेप्चुअल प्राइमरली कोर्स है. लेकिन हम इसमें जो कोडिंग है उसमें हम यूज़ कर रहे हैं पाइथन, बिकॉज पाइथन जो है वो इस वक्त नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इंजीनियरिंग में. और साथ साथ जो है क्या कहते हैं, इसमें जो कोड की अवेलेबिलिटी है और जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है. असल में ये सी लैंग्वेज का रैपर है, यानी ये समझे एक टॉफ़ी होती है, टॉफ़ी का रैपर होता है. तो ये सी लैंग्वेज के ऊपर एक रैपर बनाया हुआ है उन्होंने. अंदरूनी तौर पे सी लैंग्वेज ही चल रहा है, लेकिन ऊपर क्या है कि ऊपर एक रैपर उन्होंने बना दिया है. तो रैपर की जो फंक्शंस हैं और रैपर की जो सिंटैक्स है वो कदरे इजी है एज कंपेयर टू सी. लेकिन चूंकि हम इसमें कोडिंग जो है वो उतनी ही करेंगे जितनी ज़रूरत पड़ेगी. वी आर नॉट गोइंग टूवर्ड्स एक्सटेंसिव कोडिंग, और जो भी कोडिंग होगी उसकी एग्जांपल दी जाएगी. तो इसलिए आपको कोडिंग के बारे में फिक्रमंद नहीं होना. नो वन कैन मास्टर एवरीथिंग, or even expertise and specialization require more than a few years to work on a single thing. तो इसमें जो कंसेप्ट है उन पे फोकस कीजिए. तो और कोई सवाल? जी खालिद, आप मेरी बात समझ गई आपके? जी सर. ओके जी, बाजला आपसे कुछ कहना चाह रही हैं? ओके, बाजला की आवाज़ हमें नहीं आई, दोबारा बोलना पड़ेगा उन्हें. नो सर. नो सर, इसका मतलब है कि अभी आपके कोई सवाल नहीं है. नहीं हो, वी स्टार्ट आवर टुडेज सेशन एंड वी स्टार्ट विद दिस डायग्राम, जो कि हम इससे पहले भी देख चुके हैं. एंड व्हाट इज few important things about this diagram is that this diagram primarily represents on the left side is a unified modeling language, UML, unified modeling language UML diagram.
and this diagram is called a class diagram. A class diagram. Let me write here a class diagram. फॉन्ट में थोड़ा सा चेंज हो जाता है. Some changes has occurred in here. कुछ ऐसी चेंजेस हो गई जिनके बारे में मुझे नहीं हो. Okay, so in this diagram, if we see, this is a unified modeling language class diagram, and in this diagram, one box with a heading, and that heading is person. इसके अंदर लिखा हुआ है person, and another box with a heading, and this heading is written as a student. So the actual relationship which comes out of it is that student is a person. Sorry for this mouse. So this relationship is student is a person. Although हम ये भी कह सकते हैं कि a person is a student, but not every person is a student. Okay? कोई ऐसा person भी होगा जो teacher होगा, for example. कोई ऐसा person होगा जो primarily जो है वो let's say employer होगा या employee होगा किसी organization का. So further in this box we have there is a division, and we have in the person we have a identity, and similarly in the student box we have a GPA. एक मिनट वेट कीजिएगा. Okay, I'm back now. So we have in same in the student box. We have the box divided into two parts, and one part written as GPA, and also there is a minus sign. Okay, so minus sign shows this variable identity, the identity of the person. This variable is a local variable to this box. Okay, we cannot access this variable outside of this box. Okay, this is primarily a personal information which is contained inside this box. इसके साथ लिखा हुआ फॉर्मेट इसका, बट इन पाइथन देयर इज नो फॉर्मेट जो कि प्राइमरीली हमें यूज़ करने की ज़रूरत है. पाइथन ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड एंड असाइन ए डेटा टाइप टू दिस वेरिएबल. तो इस तरीके से वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज ए प्लेस टू स्टोर द इंफॉर्मेशन और डेटा इनसाइड ए कंप्यूटर. ठीक है, एरो का आप देख लीजिए, एरो जो बना हुआ है इट इज पॉइंटेड फ्रॉम स्टूडेंट टू पर्सन. ओके, सो स्टूडेंट बाय इटसेल्फ requires a link to the
पर्सन, ठीक है, दैट्स वाई स्टूडेंट इज ए पर्सन। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ज़ाहिर है एरो होता है, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द टेल। ओके, सो टेल से हम बनाना शुरू करते हैं, दिस इज एरो। ओके, एंड सिमिलरली जीपीए इज ए वेरिएबल, and this variable, the minus sign shows it is a local variable, it's a private kind of thing। okay, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एक कंसेप्ट है जो कहलाता है प्राइवेट एंड पब्लिक। आई डोंट नो ये जो है वो माउस, ये जो पॉइंटर है ये ऐसे क्यों लिख रहा है। सो दिस इज ए प्राइवेट टाइप ऑफ वेरिएबल इनसाइड द पर्सन क्लास। Now towards writing the code, अब हम कोड की तरफ चलते हैं कि जो कोड है उसको हम जो है वो इंटरप्रेट करेंगे। सो मोस्ट स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द कोड, so the code start with the keyword class. Class is here is a keyword, keyword। थोड़ा मैं ऐसी जगह पे लिख दिया जहाँ इसको मुझे फौरन ही मिटाना पड़ेगा। ओके, so we have a keyword class and the name of this class is person। जिस तरीके से हम सी लैंग्वेज में डिफाइन करते हैं कि इंटीजर, क्योंकि सी लैंग्वेज आपने पढ़ा हुआ है, इंटीजर ए, और ज़ाहिर है उसमें हमें फिर सेमी कोलन भी डालना पड़ता है क्योंकि टर्मिनेटर रिक्वायर्ड होता है। पाइथन में सेमी कोलन चाहिए नहीं होता, लेकिन इंटेंडेशन होती है। इंटेंड का मतलब क्या है, टैब देना पड़ता है, थोड़ा सा स्पेस देनी पड़ती है, तो यहाँ कोलन यूज़ होता है। कोलन के बाद इसकी आगे डेफिनेशन है, ये तो इसका नाम है। डेफिनेशन में जो डिफ़ॉल्ट फंक्शन है इसका, उसका पहला पैरामीटर हमेशा सेल्फ होगा। उसके बाद जो है वो आइडेंटिटी, ये वाला जो आइडेंटिटी है हमारे पास, देन इनसाइड दैट डेफिनेशन किसी फंक्शन, ये फंक्शन की डेफिनेशन है, ये डिफ़ॉल्ट फंक्शन है इनिट के नाम से। और जैसे ये फंक्शन जो है ये कंप्यूटर में हम इसको रन करेंगे, देन we have to write self dot identity is equal to identity। So in this way, whenever we write self, we can replace this self with this person। So we can write it like this, person dot id। Okay, so self actually corresponds to the person, self corresponds to this person, okay, or the object itself, because this person is now an object। हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एंड दिस पर्सन इज ए ऑब्जेक्ट। एंड अगर हम पूरा इसको पढ़ें तो इट इज एन it is a class object। So this person is an object, and the identification is one of its private data, okay, private data variable, and we can access this variable like person dot identity। Okay, so this is the pretty much
which we already know in very initial जो है वो लेक्चर्स जिसमें हमने इसको स्टार्ट किया था. इसको थोड़ा सा हम फर्दर डिटेल में देख लेते हैं. लेट अस कोड दिस इन द ऑनलाइन डिबगर. जो हमारा ऑनलाइन डिबगर है उसमें हम इसको कोड करते हैं. ठीक है. ओके, सो वी गो टू द ऑनलाइन debugger. Delete this as the online. So in online debugger we have to select the language. So we selected language Python. We just delete it. और अब यहाँ पे हम लिखेंगे class person, and then we define the init function, and this init function takes 2 parameters, and these 2 parameters are the object, यानी जो object है वो बजाते खुद होगा, and then the identity, and then we write self dot id is equal to identity. Okay. So this is pretty much a definition, and when we run this, it just finished. Okay, the Python understands that I have done with it, and now I know this class. So we can write a class like I am person1, and this person is a type person, and we know that we have to provide the ID as well. Okay, identity. Here we have to provide the identity of that person. So we provide the identity of that person. For example, we provide the identity as 12 dash let's say 2020. Okay, we can write any number here. 1 2 3 4 लिख देते हैं, वो ज़्यादा मुनासिब. 1 2 3 4. Okay. Now we can execute this function again, and now it has a variable or an instance of the object person. Okay, मैं इसका comments लिखता हूँ. Instance of person class. So person1 is an instance of the person class. So how can I access this identification of that person? So the identification of that person can be accessed if I write person1 dot id. Okay, so then I have to print it as well. Print person dot id. So it should print 1 2 3. So print 1 2 3. So it remember that the person1 dot id is primarily I have already stored in this data structure. Okay, because class is also a data structure like integer, like any other variable like double. So it saves the information. So we can write in a more meaningful way. Person1 identity is equal to person1 dot id. Okay, so I just run it. So it
it says that person 1 identity is equal to 1, 2, 3, 4. So this is more meaningful way of printing the information which is inside the class. Okay, so someone may want to write, let's say, person 2 is equal to person with identity, let's say 5, 6, 7, 8, and we can now write another print statement. Print. So the person 2 identity is equal to person 2 dot ID. Okay. Fine. So what it has to do, it will then again initialize another person to data structure or variable, and that variable is then an instance of the person class with the identity set to 5, 6, 7, 8. So we go ahead and we can able to write this. So this is pretty much the idea which we have already discussed initially in the previous few lectures, and we can also add here a person name and identity, and then we can say that self dot name is name. This is the convention how to write it. And now we have to supply two things, okay, the name and the identity. Okay, so the person name is, let's say I write the person name is, let's say any name. कोई यहाँ थोड़ा सा गाइड करना चाहेगा? जी सर कोई भी लिख लें. Okay, is it okay? Okay, so the person 1 name is starting with E, and the person 2 name is starting with N. And now as we can see the person 1 identity, we can write the person 1 name as well. Okay, so person 1 name and then person 1 identity is person 1 dot ID. Okay, I just quickly write here person 1, person 2 name, and then person 2 identity is this one. Okay, so this should actually print the person 1 name and the identity of the person. So when I run it, it displays the person 1 name and then the person 1 identity. Okay. I can have more meaningful way of writing it, like I just separate it with a, let's say, semicolon. So that it look more meaningful way of writing the information. Okay, this is the way we can set, we can write the information, but there should be some way to primarily the set we can primarily change we can change the name and identity at some point in time in the class. Okay, so that we will now learn in our next few slides. यहाँ आपके ज़हन में कोई सवाल आ रहा है बेटा? Any question? No, sir. Okay.
So I request you to kindly ask your friends जो आपके ग्रुप में हैं, they can also join this session. मैं इसका एक छोटा सा स्क्रीन प्रिंट लेना चाहूँगा अपने रिकॉर्ड के लिए. We are in the week 5 of session, so I'm just saving that record. Now moving back in our original slides. देखिए आपके पास टाइम होता है ना, then if you get time, so you can go to the online debugger app web, and you can practice few interesting things there. If this coding interests you, आपने देखा होगा कि there is a lot of interest in software nowadays. उसकी कई वजूहात हैं, but this is one way in which you can get yourself involved. I think pretty much clear everything here in at least the first part, जिसमें हम जो है इस part को ज़रा थोड़ा डिटेल से देख रहे थे. And now we are moving to the next part, which is more interesting, and I'm sure it will also attract you as well. Okay, this one. Okay, this part. Now we are talking about this part, and what is happening here is that we have another class student, but it is linked to the class person. Okay, this is the way how it links to the class person. So we have created a link. तो अब जो है वो आगे भी इसको हम यूज करेंगे. So in the first definition, this class will take two parameters. One is the identity and one is the GPA, or the grade point average. So two arguments are the parameters are required. So two parameters are required when we initialize this class, or we initialize an instance of this class. Okay? One is the identity and another is the GPA. And also one interesting thing is this line, which does primarily, which call the class, the default class inside the person with the identity. तो आइडेंटिटी की मदद से जो है वो जो एक्चुअल क्लास है पहले जो मौजूद है उसका जो डिफॉल्ट फंक्शन है उसको कॉल करेगी. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द कोड ऑफ दिस डिफॉल्ट फंक्शन, इट जस्ट मेक वन रेफरेंस. इस रेफरेंस का फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि द आइडेंटिटी विल ऑटोमेटिकली अपडेट, although identity is not defined in this student class. स्टूडेंट क्लास में आइडेंटिटी डिफाइन नहीं हो रही, लेकिन स्टूडेंट क्लास में आइडेंटिटी प्रोवाइड हो रही है और वो आइडेंटिटी यहाँ सेव हो. ओके, इट विल बी सेव्ड हियर. सो दिस इज द इनहेरिटेंस. And similarly the GPA is then become the self, and this self is nothing but the student. Okay, मैं कलर चेंज करना चाहूँगा. This self is this student. Okay, this self is this student. Okay, and similarly if we go to the person, and inside the person this self corresponds to this person. Okay, this should be clear because self occurs in both classes. So self corresponds to the object itself, जो कि नाम है प्राइमरी इस क्लास का. So this has to be the concepts are like जैसे केमिस्ट्री के कंसेप्ट होते हैं ना. So the concepts are very much similar. Now moving ahead, when we create an instance of the student class, then we have to provide two arguments, two parameters, because the default definition involves
2 पैरामीटर्स. अगर हम 2 पैरामीटर नहीं देंगे वो एरर देगा. ओके. So then we can primarily instantiate a student class which is inherited, and student then inherited the person class, and it is using the identification of the person class. तो इसको भी करके देख लेते हैं. We have already written a code inside the online debugger, or we go to the online debugger here, and I just remove the additional things जो हमने इस प्रोग्राम में की है, and I just remove some spaces. कुछ spaces भी remove करना चाहूँगा ताकि now I have to define a student class, and remember this class is inherited, so it is inherits the person class. So person class become one of the parameters inside the student class. Now I define the init function, the default init function, and remember to write self, and then remember to write the identity and GPA. Okay. Now this person class, the link to the person class. Okay. So the person dot the init class in the person. Okay. So with the self and the identity. And then क्या हमने जस्ट कोड जो हमारे पास दिया गया था उसको हमने यहाँ पे टाइप कर दिया. ठीक है. अब इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं. Okay, get executed. Okay, now the Python, the module knows there are 2 classes, और मेमोरी के अंदर उसमें उन दोनों क्लासेस को लिख लिया है, तो डेफिनेशन को जान लिया है. Now we can instantiate let's say a student 1, which is a instance of the class student with the identity. So we can write the identity like we have written in our, and let's say this student has a CGPA. This is a problem with my keyboard. Okay, so the GPA is, let's say, 3.1. Okay, we have a question. Let's see the question first. खालिद कह रहे हैं कि अगर यहाँ स्टूडेंट के स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए, तो अगर हम स्टूडेंट के स्पेलिंग में मिस्टेक लेट डू इट करके देख लेते हैं. देखिए, एरर भी जनरेट करना जो है ये भी एक ज़रूरी होता है ताकि हम उससे सीख लें. ओके, तो जैसे मैंने यहाँ स्टूडेंट के स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी, सो आई हैव रिटन हियर the correct spelling. So it says that there is an error, student is not defined. Okay, so there is an error, so I correct this. Thank you Khalid, आपने हमें बताया कि there is a correction is needed. So student person, student person, so now both are same. No, we should not get an error here. So if there is an error, the program will tell us if this is the error. Now we have
student 1 with the identification and student 1 with the GPA. Okay, so we execute this command now. Okay, because we have not written print here, so print should be a print function. So as expected, it is now writing the primarily the identification of the student and the GPA of the student. So there are many possibilities here, like I can write in a more meaningful manner, like student 1 identity, and similarly I can write on the next line that student 1 GPA, student 1 dot GPA. Okay, so now I can run this again. It writing the student 1 identity and student 1 GPA. Okay, it's nice to primarily learn that we can link two different classes together, and after linking these two classes we can primarily instantiate one class which can inherit the other variables inside the data variables inside the other class, जो कि parent class है. अगर ये let's say it is a kid and it is a parent, so this is the relation there. The parent, the kid then carries the name of the parent as well, or some information from the parent as well. So this is pretty much we have gone through this code as well as this diagram. The more important thing is this diagram. Okay, more important is this diagram. It is not easy, or primarily if someone is not primarily regular coding exercises, जो regular एक programmer है, उसके लिए तो syntax की अहमियत है, कोड को याद रखने की अहमियत है, but for you guys it is not primarily necessary, ये ज़रूरी नहीं है. Okay, our session is about to expire. We take a break here, and after the break we will be primarily going inside another step to the same paradigm, जिसमें कि हमारे पास पर्सन और स्टूडेंट क्लास के इंटरनल we have some public member functions. Okay, so we have some functions. With the help of those functions we can make a change in the identification and the GPA, and additionally we can display it, so we do not need to write the print command, or print जो हमारा function object है उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, so we can do it. So do not go away. 5 मिनट तकरीबन 10 मिनट के बाद हम दोबारा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, उस पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा. ये रिकॉर्डिंग जो है ये तकरीबन 5 मिनट ले लेती है सेव होने में. So we will meet